Hello students, welcome back to my channel. Today we'll start Childhood and Growing Up Course 1 and this Unit 1 Growth and Development. We'll be talking about the meaning and definition of growth. B.Ed में आप जितने भी क्वेश्चंस करो, जितने भी आंसर्स दो, सारे को पॉइंट्स में लिखना तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं. First starting with paragraph, you have to give introduction. Let's start with introduction. When an individual passes from infancy to maturity, the size of body organs undergo a change. Change किस तरह का हो सकते हैं? हाइट में होते हैं, वेट में होते हैं, बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज होते हैं, वॉइस में होते हैं. आप लोग B.Ed में जितना साफ़ सुथरा लिखोगे, जितना पॉइंट वाइज लिखोगे, फर्स्ट जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना, उसके बाद जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिखना और पॉइंट को एक्सप्लेन करना. यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. जब हम लोग का बॉडी में कुछ ग्रोथ होता है तो वो साफ तरह से दिखता है. जैसे बचपन में जैसे हम लोग छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम लोग के हाइट में चेंजेस होता है, वेट में चेंजेस होता है, वो जो भी है बॉडीली चेंज हम लोग को नज़र आता है. यहाँ आप लोग को नोट्स प्रोवाइडेड है, यू कैन गो थ्रू. If there is an increase in height and weight, it can be called as general growth, which is seen in every living being. Here are some definitions given by Sorensen. By growth is increase in body and bodily organs from the viewpoint of height and size. It is the growth which can be measured, as I told earlier, as I told you all, that it can be measured and it is seen from outside. हम लोग को ये हम लोग ये महसूस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि लोग बड़े हो रहे हैं, अपने साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी का वेट इंक्रीज़ हो रहा है. और आप एक बात नोट कीजिएगा, आप जितना कोड्स लिखिएगा जो भी राइटर्स के थ्रू दिया हुआ रहता है ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो आप लोग को मार्क्स अच्छे मिलते हैं B.Ed में. नाउ मूविंग फर्दर, हियर इज़ अ given definition by Frank. Growth is regarded as multiplication of cells as growth in height and weight. Minimum, you have to write 2 or 3 definitions, that is enough. One more definition you will go through. Characteristics, features of nature. Question किसी भी तरह से आएगा या फिर characteristics, features or nature, you have to write in this way only. Growth is a natural process. You may explain some in your own words also, or you're writing this much is also enough. Growth, number 2, growth is concerned only with lively or concrete organisms. Number 3, growth influences development too. Number 4, there is a definite limit of growth. Here point number 4, after some limit, growth. Point number 5, the process of growth occurs from conception to the age of 18 to 20 years. Number 6, in growth there occurs an increase in an individual body weight and working capacity which almost complete 18-20 years. Number 7 point, all organs do not grow at a uniform rate. हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का ईयर्स, नोज़, ये तो हमेशा नहीं बढ़ते, ये एक लिमिट के बाद रुक जाते हैं ना. हाइट तो कंटिन्यू, वो भी एक लिमिट के बाद रुक जाते हैं. सेम वे ये एक यूनिफॉर्म रेट में ग्रो नहीं होता है. नंबर 8, द रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज एट डिफरेंट एज लेवल्स. ट्रू. 9, ग्रोथ इज़ क्वान्टिटेटिव, इट कैन बी मेजर्ड, एज आई टोल्ड अर्लियर, वो मेज़र किया जा सकता है. नंबर 10, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. दोनों पे डिपेंड करता है. जैसे हेरिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, अगर किसी के मदर फादर अगर शॉर्ट हाइटेड है तो बच्चे भी शॉर्ट हाइटेड होते हैं. अगर किसी के मदर फादर जिनकी हाइट है वो बच्चे भी हाइटेड होते हैं. द सेम वे कलर्स ऑल्सो एंड एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली असर पड़ता ही है ग्रोथ पे. 10 points are enough for writing in your exam.
But always remember that you have to give answers in point wise, and you have to start with introduction and end with a small paragraph of conclusion according to the question given and topic given. Now, now we'll be talking about meaning and definition of development. Let's start. The term development denotes change or transformation. The different change taking place in an individual at a particular stage are called development. It includes the change occurring in an individual from the viewpoint of mental, social, emotional, and physical development. I have given you the notes in very simple language. Once you will be reading and understanding, you will be able to write in your own words. That is, all the changes occurring in an individual are called development. The changes occurring in an individual has impact on individual difference. Development takes place in a certain direction of a predetermined order. During the course of development, an individual proceeds towards maturity continuously, as a consequences of which different qualitative changes can be seen in an individual. अंडर डेवलपमेंट इंक्लूड्स डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है हम लोग का डेवलपमेंट सोशल तरह से हो सकता है होता है कल्चरल मोरल मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस these changes are of two types. First is quantitative and number two qualitative changes. And some definitions are given by Boring by here quote, by development we mean the reoccurrence or form changes is physiological structure is due to growth. Here are some more points. This one is too long, but you at least you have to write two definitions, two or three. You'll get good numbers. Now moving to characteristics of development. Development is a natural and social process. Development is a continuous process. Number three, development occurs in a certain sequence and is different in rate at different age levels. Number four, all aspects of personality, emotional, social, bracket close, do not develop at a uniform rate. Number five, there is no limit to development. Number six, development comprises both quantitative growth and qualitative progress. Qualitative progress of development cannot be measured by mathematic method. Number 8, development cannot be measured, rather it is observed. Here, growth can be measured, but development cannot be measured. It can be only observed. Its measurement can be done indirectly by behavior. Number 9, development is an integrated and multidimensional aspect. Number 10, development depends on both heredity and environment. Here ends the topic. Here you can make your own notes, and if you want you can add, but this much is enough, but you can add some more points or some more paragraph to fetch good marks in your exam. Okay, thank you. Please subscribe.